So let's go for this particular problem. So what is this? So there is a two pendulum, and this is simple pendulum of mass m, and another pendulum have mass m, and both have length L. So both have length L. And what will happen at the center of this particular rod, there is a spring is going to attach. So this is your spring, and this spring is going to attach. And the value of this spring constant is K, and this K is given in term of M and L. So this K is mg by L. So this is something order of mg by L, such that you can solve it comfortably. And due to this particular value of K, the calculation can be little bit nice one. Okay. What we have to do, we have to just solve this particular system for small oscillation, and we have to find the normal frequency. So this is a wonderful problem. So let's go for L by 2. So this height is basically L by 2. So how you will solve this particular problem? So obviously, when we are going to solve it, we will just try to displace it in a very small displacement. So what will happen? So this is our reference line for first pendulum, and this will be look like this. This is reference line for my second pendulum, and this will go like this. And we have this as our spring. So a spring will elongate also. What I can do, I can take this angle is θ1, and I can take this angle is θ2. And once we know this angle, and we all know the basic nature of simple pendulum, the generalized coordinate of simple pendulum, all this thing we know very nicely. So what we will do? First we will write the kinetic energy. And yes, this rod is massless. अगर ये rod में mass आ जाएगा, then obviously one more thing will become, जो कि हम लोग last part of टॉपिक में करेंगे जब हम लोग रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे. बट हियर दिस इज जस्ट अ सिंपल पेंडुलम, दैट मींस दिस रॉड इज massless. Okay, so now this mass is m, this mass is m. So let's try to write the kinetic energy, because it is very simplistic thing. So what will be kinetic energy? So kinetic energy will be half m L square θ1 dot square plus half m L square θ2 dot square. ये तो आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो गया, आप है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? यस, यहां तक क्लियर है? ओके, so let's try to go for potential energy. So what is your potential energy? So here is two potential energy will be that. One is due to gravity and one is due to restoring energy into this particular spring. So first we will write for the gravity. So when we will write for gravity, then potential energy V is nothing but minus mgl cos θ1. So this is for first one. So if this is theta, this is basically y is cos θ1. And for second one, we have mgl cos θ2. So this is due to gravity. And now we have to go for this particular elongation in this particular spring. So what will be elongation of this particular spring? Can anybody tell me? What will be elongation of this particular spring? बताइए. So this thing will be there, and after then we will go for next part. बताइए क्या होगा next one? That is the most important thing. इसी पर आपको सारा काम करना है. θ2 is the elongation. In the θ2 is the only elongation. This distance minus this distance is the elongation, isn't it? नहीं? yes. So what is Yes, this yes. distance? ये बताओ क्या होगा? So you will just go for half. I am adding plus here, half
K, what is this distance? बताइए. L by 2, because this is at the L by 2. So L by 2 sine theta 2 minus L by 2 sine theta 1 whole square. So this is your potential energy. Now, अब यहां पर सारा खेल शुरू होता है. ये तो आपने लैग्रेंजियन लिख दिया. अभी हमने स्मॉल ऑसिलेशन की बात नहीं की है. So we have just written the Lagrangian of this. We have written the kinetic energy, we have written the potential energy, and then we will write the Lagrangian. But we have to solve this problem for the small oscillation. So इस problem को हमें small oscillation के लिए solve करना है. So how you will go for that for a small oscillation? Obviously, the basic fundamental of the small oscillation is that all about Taylor expansion. So what you have to do, you have to just go for Taylor expansion. और Taylor expansion में कितने order तक आपको जाना है? Go to the derivation part. So why I have told you that derivation is very important. है ना? अगर आप derivation नहीं समझ पे रहोगे तो आपको नहीं clear हो पाएगा चीजें. So what will be your? So we have to go for Taylor expansion of cos theta 1. अब cos theta 1 को कहां तक लेकर जाओगे? ये बताओ. माइनस एम जी एल, और इसे क्या लिखे? 1 माइनस थीटा 1 स्क्वायर बाई 2, इजंट इट? और हायर ऑर्डर टर्म को हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं. यस. सेकंड, एम जी एल 1 माइनस थीटा 2 स्क्वायर बाई 2. क्लियर है ये तो क्लियर है. व्हाट अबाउट दिस वन? इसको कहां तक लेकर जाओगे? When you will go for the Taylor expansion, तो थीटा 2 को कहां तक लेकर जाओगे? बताओ. ऐसे बैठे मत रहो, है ना? दिस इज नॉट फेयर. प्लस हाफ के. बताओ इसे कहां तक, इसे क्या करें? साइन थी, और इसे बाहर ले लेते हैं. सो दैट इज एल स्क्वायर बाई 4. बताइए क्या होगा? श्यान, जस्ट टेल मी व्हाट विल हैपन. This would be sine square theta 2 plus sine square theta 1 minus sine theta 1 minus 2 sine theta 1 theta 2. तो इसे अगर आप ओपन कर रहे हो तो वेयर इज योर स्मॉल ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट कहां पर आ रहा है? समझने की कोशिश करो. Coupling part actually responsible for the small oscillation. लुक एट. देखो, इसी कारण मैं बोल रहा हूं कि आज मैं एक या दो ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट सारे डाउट को भी क्लियर करेंगे. चलो इस यहां पर अभी अपने आप को होल्ड करते हैं और लेकर आते हैं हम अपनी सिंपल पेंडुलम वाले प्रॉब्लम को. तो सिंपल पेंडुलम के लिए लैग्रेंजियन क्या होता है? हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस माइनस, सो दैट विल बी प्लस एम जी एल कॉस थीटा. यही लिखते हो ना? और अब पोटेंशियल एनर्जी में जो भी फंक्शन, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आता है? थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0. आर यू एग्रीड श्याम? ठीक है. Yes sir. और इसे जब आप, तो क्या इसे आप सॉल्व कर सकते हो क्या? क्या ये स्मॉल ऑसिलेशन की गारंटी लेता है क्या? No sir, if we approximate a theta sin theta equal to theta, then we can Exactly, when sin theta is equal to theta, so you are just going for the Taylor expansion up to first order in a force, isn't it? Yes sir. Are you getting my point? आप क्या करोगे? आप जब तक sin theta को, so you will just use the Taylor expansion that sin theta is equal to theta minus theta cube by factorial 3 plus theta 5 by factorial 5 and so on. And what you are doing, you are neglecting all this term by assuming that this is very small. So you can say that sin theta is equal to theta. Are you getting my point? Yes, okay. sir.
लेकिन यहां पर भी, तो अब बताओ यहां पर क्या करना होगा? Same as we would सेम थिंग यू हैव टू डू. approximate theta. एंड देखो ब्यूटीफुल पार्ट क्या है, ये स्क्वायर होने के कारण क्या होगा, इफ यू विल राइट साइन थीटा 2 इज इक्वल टू theta 2 and sin theta 1 is equal to theta 1, and then you will go for a square part, and then what you will see, you will see all are the square term will be there. So for the small oscillation the potential must be a square part. Are you getting my point? Potential में generalized coordinate का क्या होना चाहिए? Square part. Look at the definition. Definition is very interesting, and that value is half Vij eta I eta j. So you are just talking about only this term for the small oscillation. Are you getting my point? Yes, sir. And this is nothing but the generalized coordinate square, isn't it? Generalized coordinate into generalized coordinate. So when you will just go for this, due to this square part, here you will have generalized coordinate into generalized coordinate, generalized coordinate into generalized coordinate. So now your potential energy can be approximated like this. So this is the catch in this particular problem. एक बार आप ये कर लेते हो, then everything is cakewalk for you. And this is wonderful problem. It's an awesome problem that you can have in your examination. और इस तरह के problem आने ही चाहिए, because everything can be judged by the examiner. Do you know the basic fundamental of a small oscillation or not? Do you know the basic formulation of Lagrangian or not? Look at, first you have to write the Lagrangian, and then you have to go for the Taylor expansion, and the Taylor expansion is the backbone of a small oscillation. But you have to be very much conscious up to which order you are going to be do the Taylor expansion. For in the potential energy, you are going to the square part, but when you are doing the force in the force term, if you are doing the Taylor expansion, then you are going to the linear part. The all concept behind the small oscillation is all about making your force linear with restoring in nature. This is the main concept of a small oscillation. Are you getting my point? Yes, सोच sir. लो एक बार, कोई जल्दी नहीं है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं. एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स इज गोइंग टू इन्वॉल्व हियर. ओके, चलो, सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर अ फाइनल पार्ट. सो अब तो हम लोगों ने मेन काम कर दिया, एंड नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट द क्लेरिकल पार्ट. सो ये आप बहुत आराम से कर सकते हो. सो आई हैव सॉल्व myself, you can just do it and recheck with yourself. So मैंने इसे सॉल्व कर रखा है ताकि हम अपना टाइम बता सकें, और बेसिकली हम, so when you will just go for solving all this thing, then you have potential energy as, and the constant part is not important. Why? Constant part का कोई भी रोल नहीं रहेगा in the finding the small oscillation, because force is not dependent on this constant potential. So we can neglect the constant part. Otherwise, there is minus mgl, there is minus mgl is there, and you can take minus 2 mgl also. So this is your potential energy. So this is your minus 2 mgl. Just check with yourself. This is mgl by 2. I have deliberately taken 2 as common, and there is 5 by 4 theta 1 square plus 5 by 4 theta 2 square, and here you have minus theta 1 theta 2 by 2, and I have put k is equal to mg by l, then I will get this my potential. And now look at this thing. This is constant part, so you can neglect this one. Look at this one. This one is awesome. Square, generalized coordinate is square, generalized coordinate is square, generalized coordinate is square. So now we can easily write the kinetic energy matrix, we can easily write the potential energy matrix, and we can find the angular frequency or normal frequency. ठीक है? So let's go for writing the potential energy. First write the kinetic energy. चलो, kinetic energy क्या होगा? What will be kinetic energy here? M
L square 0 0 ml square। जब लीनियर मोशन कर रहा था तो वहां पर मास इंपॉर्टेंट था, और जब रोटेशन कर रहा है तो वहां पर वो रोल कौन प्ले कर रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज ml square। ओके, लेट्स गो फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बताओ? 5/4 mgl। सेकेंड टर्म इज व्हाट? minus mgl/4 because you have to make it symmetric। इसको आप दो पार्ट में रिवाइज कर सकते हो, -θ1 θ2/4 -θ1 θ2/4। so this will be symmetric, so this value is minus mgl/4 and here is 5/4 mgl। okay, so I deliberately take half part there, and this is something like we can use for K. Okay, and now you can solve this particular thing and you will get the final answer. Clear hai ye, everyone? So you have to solve V minus omega squared T is equal to 0. Then you can get omega is equal to, one term will be G by root under G by L, and omega 2 is equal to root under 3/2 G by L. You can solve it with yourself. This is your duty to do practice. Okay, I have to only explain the concept, but practice aapko hi karna hoga. Okay, so this is one of the very nice problem, one of my favorite problem for examination. Okay, kuch puchna hai to puchiye, otherwise we will go for next challenging problem. Okay, are people comfortable? सोए रहते हो, कुछ बोलते नहीं हो। नॉट कंफर्टेबल? Yes, sir. ओके, सिर्फ एक ही बंदा क्लास में है क्या? हाँ, चलो, so let's go for double pendulum. So I promise you in the earlier class that when we will go for a small oscillation, we will try to find the angular frequency for double pendulum also. So I hope you people remember the concept of double pendulum and the Lagrangian of double pendulum. So I will start from the Lagrangian of double pendulum, and then I will try to solve a normal frequency for double pendulum. Okay, और ये भी आपके एग्जाम में बिल्कुल ही तैयार है आने के लिए, ठीक है? सो कभी भी किसी भी एग्जाम में इसको पटका जा सकता है। ओके, so you people remember the double pendulum is nothing. This is your one pendulum, this is your another pendulum, this length is L1, this length is L2, this mass is M1, this mass is M2, and obviously this angle is θ1 and this angle is θ2, and this is your x-axis, this is your y-axis, and all things are in gravity. So but here for the nice calculation, I am just taking a thing L1 is equal to L2 is equal to L, and M1 is equal to M2 is equal to M. Both things, such that we can easily do this calculation. Okay. Okay, so I think you people remember the double pendulum kinetic energy M L1 square M1 L1 square θ1 dot square plus half M2 L2 square θ2 dot square. Okay, and then you have cross term, sorry, M2, this will be M2 L1 square θ1 dot square plus L2 square θ2 dot square plus 2 times L1 L2 θ1 dot θ2 dot
And you remember, this is cos theta 2 minus theta 1. I think you people remember this thing. And what is your potential energy? The potential energy here is minus m1g L1 cos theta 1. You can just go and revise your double pendulum, okay? And minus m2g L1 cos theta 1 plus L2 cos theta 2. So this is your potential energy, okay? I think you people remember all this thing. So what we have to do, we have to just try to write all this thing for the small oscillation. And we have to solve for normal frequency by putting this value. Okay? Okay. Now, here is the most important thing. This thing is okay for me. Are you people comfortable? ये तो okay है ना? Because what is the kinetic energy? The kinetic energy is half Tij eta I dot eta j dot. So we have to take care of this thing such that this will be eta I dot and eta j dot will be the kinetic energy. Tij is nothing but a coefficient of eta I dot eta j dot. So you have to be very much careful about this one. So yes, it is in this form. Yes, I am agreed with this. Are you people happy with this one? अरे कुछ तो बोलो. Yes. Yes. Are you people happy with this one? Yes. Yes. Are you people happy with this one? Yes or no? Yes, sir. Yes. What about this one? So we have to approximate this. If you are going to approximate this, then what is going to happen? You have to go now. It's a very good suggestion that we have to approximate this. Now, so what you have to do? Cos theta 2 minus theta 1 can be written as 1 minus theta 2 minus theta 1 whole square by factorial 2. Yes? And plus higher order term will be there. So now, Syan, just tell me, अब मैं इसको कहां तक अप्रोक्सीमेट करूं? यहां तक अप्रोक्सीमेट करूं या इसे भी लेकर के जाऊं? हायर ऑर्डर टर्म को तो मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं. बताओ. I think we have to take it just for the up to one value. Up to one value. Very good. Up to one value. Why not this value? Because अगर आप ये वैल्यू इसमें इंक्लूड करोगे, then the thing will not remain linear after the yes. The thing will not remain linear. So here, what we have to do, we can assume that this value is 1. है ना? क्योंकि ये दोनों तो स्क्वायर का टर्म है ही. अगर एक और थीटा 2 और थीटा 1 का टर्म आ गया, then it will create a havoc. फिर सिंपल हार्मोनिक नहीं रहेगा, वो चीजें हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं रहेगा. That thing will be changed. We have to manipulate mathematics in a very efficient manner. बहुत ही कनिंग होकर आपको मैथमेटिक्स को यूज करना है. मैथमेटिक्स की दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसे बहुत ही आराम से निकालना है. Are you getting my point? So this is interesting. Now, चलो, what about potential energy? So my kinetic energy is basically, so I will use this space. चलो, ये space में kinetic energy लिख लेते हैं. So after this particular approximation, my kinetic energy is, so I will just take theta 1 dot square common, and we have m1 L1 square m2 L1 square. So this is first thing, plus half m2 L2 square
theta 2 dot square plus half 2 time L1 L2 theta 1 dot theta 2 dot. So let's write the kinetic energy matrix first, because here kinetic energy is most challenging. Potential energy is quite easier into this part, but into the last problem you have seen that potential energy is more challenging, but kinetic energy was easy. Now just tell me, what is your kinetic energy matrix? बताइए. So just put m1 is equal to m, m2 is equal to m, l is equal to l1 is equal to l, l1 is equal to l. क्या होगा बताओ? फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 2 ml स्क्वायर. ओके, नाउ सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? This another diagonal term ml square. I am just putting this one. m1 is equal to m2 is equal to m, and L1 is equal to L2 is equal to L. Okay. Now, what about off diagonal term? Off diagonal term में क्या आएगा? And M2 is there, sir. In the third term. हाँ, M2. M2 भी रहेगा. हाँ, बताओ ऑफ डायगोनल में क्या आएगा? बताओ बताओ बताओ, फटाफट बताओ. बताओ क्या कर रहे हो? अरे कोशिश तो करो, गलती ही तो होगी. व्हाट विल हैपन? इसको सिमेट्राइज करोगे तो क्या मिलेगा आपको? इसको सिमेट्रिक करोगे तो क्या मिलेगा? ऐसे लिख सकते हो ना, 2 half m2 l1 l2 theta 1 dot theta 2 dot plus l1 l2 theta 2 dot theta 1 dot, है ना? अब बताओ क्या होगा? m2 का m पुट कर लो, so ml square, and this will be also ml square. So this is your kinetic energy matrix. ठीक है? So let's try to go for potential energy, and here potential energy is quite easy. यहां तक क्लियर है ये? And now you can see the first time the kinetic energy is not diagonal. So it is not necessary that your kinetic energy is always diagonal. Okay? चलो, let's go for potential energy. So इसको हटाते हैं. Now, just tell me, are you happy with this potential energy part? Yes या no? कुछ तो बोलो यार, इतना बोरिंग. mg l1 cos थीटा 1 को क्या करें? हाँ, ऐसे ही रहने दें, कुछ चेंज करें? कहां तक चेंज करें? सेकंड टर्म तक. सेकंड टर्म तक 1 माइनस थीटा 1 स्क्वायर बाई 2. वेरी गुड. माइनस m2g l1, इसको भी क्या करें? 1 माइनस थीटा 1 स्क्वायर बाई 2. हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट करो. L2 1 माइनस थीटा 2 स्क्वायर बाई 2. थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करो, तब तो पढ़ाने में मजा आएगा. हाँ, ऐसे में लिखते रहूं, दैट इज वेरी बोरिंग. फिजिक्स से कोई मजाक थोड़ी है. चलो, सो ये सारा टर्म तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कुछ भी लेना देना नहीं है. वी कैन नेग्लेक्ट कांस्टेंट टर्म. सो वी विल जस्ट गो फॉर अ पोटेंशियल. सो जस्ट गो फॉर m1 is equal to m, l1 is equal to l, and all these things. So minus minus plus. So you have m g l1, यहां से भी थीटा 1 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, यहां से भी थीटा 1 स्क्वायर. So m1g l1 plus m2g l1 theta 1 square by 2, and just go for this one. This is So again, that would be this G. thing is minus, है ना? ऐसा रहेगा. So this minus will be there. So you have m2g l2 theta 2 square by 2
प्लस सम कांस्टेंट, ये सारे को आप कांस्टेंट में लेकर जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए वो राइट डाउन पोटेंशियल एनर्जी मैट्रिक्स। सो पुट m1 इजिकल टू m2 इजिकल टू m, क्या होगा? 2 mgl। वेरी गुड, 2 mgl। क्रॉस टर्म 0, क्रॉस टर्म 0, ये क्या हो जाएगा? mgl। वेरी गुड। देख रहे हो कितना मजेदार है, ये आना चाहिए एग्जाम में, है कि नहीं? तभी तो मैक्सिमम लोग गलत करेंगे। सो v माइनस ओमेगा स्क्वायर t मस्ट बी इक्वल टू 0। अब आप इसे सॉल्व कर लेना, आई हैव सॉल्व माई सेल्फ। सो ओमेगा 1 इज इक्वल टू रूट अंडर g बाई l, and this value is equal to 2 minus root 2 to the power half. Omega 2 is root under g by l, 2 plus root 2 to the power half. ठीक है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, डोंट वरी, एनी टाइम। प्लीज ये दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, डोंट टेक इट लाइटली कि 2 ही क्वेश्चन किया है, आप घर में जाकर खुद से करो, मजा आएगा आपको, है ना? ऐसे एक भी प्रॉब्लम अगर पूरे दिन भर लगाते हो तो दिन भर की पढ़ाई हो गई। ओके, बेकार बेकार के क्वेश्चन लगाने से बेटर है कुछ ढंग के क्वेश्चंस लगाओ। एनीवे, सो आई एम जस्ट गिविंग यू वन होमवर्क, दैट विल आई विल डू इट इनटू नेक्स्ट क्लास। ये भी मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, दैट इज वन ऑफ द माय फेवरेट क्वेश्चन, और ये भी जस्ट के एग्जाम में आया हुआ है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू दिस वन, देखते हैं आप इसको कैसे करते हो। सो कल आपके सामने इसकी सॉल्यूशन बहुत मजेदार है, कैलकुलेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। इफ यू आर नॉट एनफ स्मार्ट टू डू कैलकुलेशन, ये आपसे एग्जाम में होगा ही नहीं। सो अगर लेकिन आप अगर स्मार्ट हो, चीजों की सिमेट्री समझते हो, तो आप बहुत ब्यूटीफुली कैलकुलेशन कर सकते हो। लुक एट दिस प्रॉब्लम एंड आई विश कि कोई तो पोस्ट करो सॉल्यूशन, सिर्फ क्लास करना है और घर में जाकर सो जाना है, नहीं? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इसकी नेचुरल लेंथ l है, इसकी भी नेचुरल लेंथ l है, इसकी नेचुरल लेंथ 2 बाई l है। दिस मास इज m, दिस मास इज m, okay, and the spring constant is k, and this will be k dash. This is again in the JEST examination. Wonderful problem, wonderful problem. Okay, m तो है ही. So this will be move into this direction and this particle will move into this direction. Okay, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा और ये ऐसे ऐसे मूव करेगा. So ये अगर मूव करेगा तो इसका भी इफेक्ट आएगा, ठीक है? So this is just going to move along x-axis, this is just going to move along y-axis. Just try to find normal frequency. This is your challenging question. ये भी जस्ट के एग्जाम में आया है, मैंने इसका सॉल्यूशन बना रखा है, बट प्लीज आप सॉल्यूशन मत देखना, आप खुद करो, कल मैं आपके साथ इसे डिस्कस करूंगा, ठीक है? ओके, चलो, आई थिंक मुझे इतना ही टाइम अलॉट किया गया है ना? चलो, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। चलो, आई एम एग्जैक्टली concluding at the 6:25. Thank you.